देखिए राजा, क्वेश्चन देखिए। मैट्रिसेस द मतलब A is equal to matrix is given 0 1 2 1 2 3 3 1 1 matrix given. First of all, last class, the last session, last topic is minors and cofactors. So first of all, find and tell me the minors as well as the cofactors. Minors and cofactors. So tell me what will be A11 minus. याद है सब लोग? For 0, it will be this minus this. 2 into 1 minus 1 into 3 means 2 minus 3, that is minus 1. Yes or no? What will be A2? This is A2. So it will be 1 minus 9. Answer will be minus 8. What will be A3? Madhur, any doubt? Minus clear? So minor A13, it will be 1 minus 6, that is minus 5. ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कर लो, दैट्स ओके, बट एग्जाम स्टेप्स शो करके करो. ओके, व्हाट विल बी A21? एंड एडिट. अगर देखो क्वेश्चन ही पूरा फोकस्ड है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स थे, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन आस्क्ड, उन्हें आप स्टेप्स लिखेंगे. ठीक है, बोलो A21, it will be 1 minus 2, that is minus 1. A22, it's 0 minus 6, that is minus 6. मतलब A23, this is gone, so 0 minus 3, that is minus 3. Next, A31, it's 3 minus 4, minus 1. A32, it will be 0 minus 2, minus 2. A33 will be 0 minus 1. For A33, 0 minus 1, it's minus 1. ठीक है, किसी ने स्टेप्स से डाउट आ रहा है तो यू कैन रेफर द प्रीवियस क्लास. यस और नो? प्रॉपर डिटेल से क्या सी, इट्स जस्ट अ रिकॉल. नाउ व्हाट्स द कोफैक्टर्स? कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. What was the concept? minus 1 power 2 minus 1 पावर कितने लग दी? सम ऑफ रोज एंड कॉलम 1 and 2 मतलब 3, minus 1 power 4 minus 1 power 3 minus 1 power 4 minus 1 power 5 minus 1 power 4 minus 1 power
5 minus 1 power 6 and multiply it with the minus. Minus 1, minus 8, minus 5, minus 1, minus 6, minus 3, minus 1, minus 2, minus 1. Now where the power of the minus 1 is in even, the sign will remain same because minus 1 the power even is 1. So 1 ना किसी चीज में multiply करो, it will remain same. Means मतलब इतने क्या होगा राजा minus 1 same, here minus 5 same, even वाले सारे देख सकते हैं. 2 2 ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ -6, 3 1 ਦੇ ਕੇਸ -1, 3 3 ਦੇ ਕੇਸ -1. ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ. ऑड वाले सारे ਦੇ साइन opposite हो जाओगे. Means it will be 8, this will be 1, this will be 3, this will be 2. So any doubt in cofactors? Clear, yes or no? This became cofactors of the given matrix. Yes or no? Clear? 100%? इस क्वेश्चन आज कल्ला असी माइनस एंड कोफैक्टर्स ने सीखने. We need to find the adjoint of A. We need to find adjoint of A. Okay. For adjoint of A, first step was minus. Second step was cofactors. Third step, put the cofactors in a matrix. Put the cofactors in a matrix. Where you can say cofactor matrix. मुस्कान की कार्य next step बच्चा cofactor matrix. So it's -1, 8, -5 and 1. Then -6 and 3, -1, 2, -1. So this is the cofactor matrix. Everyone, yes or no? This is the cofactor matrix. This is the cofactor matrix. What we require? Adjoint. Now you need to know what is adjoint. Yes or no? The only point left is what is adjoint of A? Adjoint of A. Yeah, or you can write like this also. Adjoint A is equal to transpose of cofactor matrix. Ritika, what is adjoint of A? It's transpose of the cofactor matrix. Now, what will be the transpose of cofactor matrix? Read row wise, right? Column wise. So row wise it's -1, 8 and -5. We will write in the lower side. -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1. So this is adjoint of A. This is adjoint of A. Clear, Raja? Clear? Everyone? First step was minus. Second step was cofactors. Then we made cofactor matrix. Then adjoint of A is equal to transpose of cofactor matrix. Now what is transpose of matrix? What was that? Reading row wise and writing column wise, है ना?
जो सामने मैट्रिक्स लिखे इसका ट्रांसपोज देखो, ठीक है, बिल्कुल चेक करो। ऊपर क्या गिवन है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। In the white color, we have done transpose of that matrix. Is it correct? We have read row wise and we have written column wise. Yes or no? ठीक है? So what is this? This is adjoint of A. How? Adjoint of A is transpose of cofactor matrix. पिछली क्लास की क्या थी? मैट्रिक्स थे माइनस, यहाँ माइनस सीखे सी पिछली क्लास। आफ्टर दैट वी लर्न कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की प्रैक्टिस हो गई। जितना ही कोफैक्टर्स बन गए ਉਹਦਾ एक की बना लो, मैट्रिक्स बना दो। कोफैक्टर्स केड़े केड़े सी देखो, -1, then 8, then -5। we have written that in the matrix form। No, depends upon question। ठीक है, कोफैक्टर्स फाइंड कर ले, उस कोफैक्टर्स नो we have written in matrix form। ठीक है, जितना ही कोफैक्टर मैट्रिक्स आया ਉਹਦਾ ट्रांसपोज कर दो, you will get adjoint of A। what is adjoint of A? transpose of cofactor matrix। ठीक है, okay, now one more thing। if I give you the same matrix now again, what was the matrix, original matrix? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। Madhur, this was the matrix। Can you find its determinant? We have learned determinant also, yes or no? Can you find this? कितना करते सी नाल नाल चलो, प्लस माइनस प्लस। विल डू प्रॉपर डिटेल्ड। ओके, रिकॉल करिए डिटर्मिनेंट टॉपिक। +0। so is there any need to write something? You can show, you cannot show, no need। 0 ना मल्टीप्लाई होके 0 ही होना, you can leave that, you can write like this 0। then -1, when you have written -1, the matrix remaining is 1 3 3 1। yes or no? then next one +2, and the remaining matrix is 1 2 3 1 1 2 3 1। so can we solve this? सिफत कितने करना बच्चा सॉल्व? 0 -1 into this minus this, that is 1 minus 9 +2 1 minus 6। -2 everyone, yes or no? check करो determinant। yes or no? it's -2, correct। check the signs, correct। so it's -2 everyone, yes or no? now you have found, Tanish, you have found the adjoint of A, you have found determinant of A। what is A inverse? What is A inverse? A inverse is, listen everyone, adjoint of A divided by the determinant of A inverse is the division of what? Adjoint of A divided by determinant of A। adjoint of A मिल चुका,
चेक करो कितना पहला. Write the matrix adjoint. It was -1, 1 and -1. Then 8 -6 2. Third one -5 3 and -1. This was adjoint. You need to divide this with the determinant. Determinant was -2. So you can write here 1 by -2 outside the matrix. Dividing the adjoint of A. Adjoint of A is this matrix. You have to divide this by the determinant value. Determinant value was -2. So matrix then पूरे matrix को divide करना था. You can write 1 by something. So we wrote 1 upon -2. If we open this, this is what scalar multiplication. This gets multiplied with each and every element. Yes or no? You can open up and show. What will be the answer of the matrix then? -1 divided by -2. What will be there? -1 divided by -2. That is 1 by 2. Then 1 upon -2 is -1 by 2. Again -1 divided by -2 is 1 by 2. 8 upon -2 will be -4. -6 upon -2 will be 3. 2 upon -2 will be -1. -5 upon -2 will be 3 upon -2 will be -3 by 2. -1 by -2 is equal to 1. Any doubt? Yes. You can also go with decimals. You can also leave it in fractions. ऐसी स्टेप्स करते करते ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लें. Inverse is important for 15 marks. एक चीज हले हो ऐड होनी है केस स्टडी टाइप फॉर इनवर्स मेथड, बट इनवर्स द बेस है बहुत इंपॉर्टेंट. स्टेप बाय स्टेप सीख ले. पहले माइनस सीख ले, टू फैक्टर्स, टू फैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करके भी से एडजॉइंट. एडजॉइंट तो बाद की सीख ले, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस कर ली, दोनों डिवीजन से रखे साथ इनवर्स मिल गया. इकट्ठा सीखो मुश्किल लग रहा. यस और नो? तो दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. कितने स्टेप्स है बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल find minus, then cofactors, put cofactors in a matrix, make its transpose, it will be called adjoint of A. It will be called adjoint of A. Then find determinant, divide both, you will get inverse. ठीक है ना. कुकिंग जिद्दे कर दे. एक पैन चाह लो, चाह रेडी करो, आ रेडी करो, आ रेडी करो, कर लिया, उन्होंने छड़ के दूजे पासे आ जाए. इट्स द सेम वे. माइनस रेडी कितने, कोफैक्टर्स कितने होता, मैट्रिक्स बनाया, ट्रांसपोज करता, की मिल गया adjoint of A. Now leave that pan, come to the other pan, find the determinant, then use both together. Yes or no? ठीक है. Okay, let's go to the next question. Very important question for this topic. Very important question. Exams बहुत बार देखा गया क्वेश्चन. Right question. Matrix A is equal to 201 012 123. 201 012 123. Verify that. Question is saying verify that. Prove that. A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I3.
यू कैन थिंक कि 15 मार्क्स रियली डिजर्व करता. सोचो ध्यान. ए मैट्रिक्स पता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द ए इनवर्स. ए इनवर्सली की करना. माइनस कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करके एडजॉइंट डिटर्मिनेंट division, you will get the A inverse. Then you need to multiply the two matrices. Multiplication was also important concept. उन्होंने क्या A into A inverse check करो, आंसर आ जाएगा. I'll tell you. A into A inverse check करो, आंसर आऊगा. Is equal to A inverse into A. Opposite order से रख के देखो, आंसर सेम आना चाहिए ना. And is equal to I3. I is which matrix? Identity matrix. 3 the role किया हम. 3 the role is that the matrix is of order 3 into 3. It is of the same order. 3 cross 3 है ना, 3 rows 3 columns. So I3 means make an identity matrix of 3 cross 3 order. 3 the R order. Means in short, actually ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇसी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ. ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ. But you have to reach there using the problem. Final answer आही देखोगा. 100 010 001. पहली चीज की करोगे फाइंड इनवर्स. तो स्टार्ट विद माइनस, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करके एडजॉइंट, देन फाइंड डिटर्मिनेंट, डिविजन्स पुट करो, यू विल गेट ए इनवर्स. देन मल्टीप्लाई इन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. सारे आंसर केड़े आओगे? I3 दे बराबर. ओके, परफॉर्म द प्रॉपर्टीज क्विक. देखो राजा, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ डिटर्मिनेंट A कितना फाइंड किया? Everyone check your answers. -3. After that A inverse कितना फाइंड किया? Okay. A inverse is 1/3. बोलो. Okay. Multiply करता ना अंदर. Yes. So 1/3 minus 2/3 1/3 minus 2/3 minus 5/3 4/3 1/3 4/3 minus 2/3. इतना आया शब्द. उसका फोन नहीं बचा, कॉपी से हाथ चलाओ. ए इनवर्स आ गया शब्द इतना. क्वेश्चन ने क्या वेरीफाई दैट A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I, identity matrix of order 3 into 3. मीन ਸਾਨੂੰ आंसर पता कि साडा इत्थे पहुंचना चाहिए. ठीक है. तो you need to check A into A inverse. A into A inverse. Tell me what was A matrix? 201 012 123. And A inverse ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ. ठीक है. Yes or no? ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਯਾਦ ਆ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਮਝਿਓ ਰਾਜਾ. ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ. 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ. देखो, फॉर मल्टीप्लीकेशन सबनों याद है मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट मैट्रिक्स नो रो वाइज मार्क कर लिया, सेकंड नो कॉलम वाइज मार्क कर लिया. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम. तो पहले 3 एलिमेंट्स आओगे. देन सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद थर्ड कॉलम. वो तो सेकंड लाइन सॉल्व होगी. देन third row with first column, third row with second column, and third row with third column. This was the way. ध्यान सुनो. First row first column.
2 into 1/3 कितना आया 2/3 plus 0 into minus 2/3 0 into something is 0 plus 1 into 1/3 1/3 हो गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ आया देखो this is first element this is first element now come to second element how first row second column 2 into minus 2/3 2 into minus 2/3 it becomes minus 4/3 0 into something again 0 1 into 4/3 plus 4/3 आंसर देना बच्चा थर्ड चेक करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1/3 कितना आ गया 2/3 और कोई इस टॉपिक की चीज समझ लो कंजस्टेड करके नहीं करना नहीं तो गलती करो देख रहे कि मैट्रिक्स ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ तो 2 into 1/3 2/3 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 1 into minus 2/3 it becomes minus 2/3 और फायदा सोच रहे ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ प्लस 2/3 माइनस 2/3 आ रहा है ना 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 1 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ so it becomes 2/3 plus 1/3 3/3 that is 1 हो गया फर्स्ट लाइन सेटिस्फाई हो रही है आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ रहे दिस इज योर वेरिफिकेशन साइड बाय साइड ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਗਰ 100 ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ অর नो नेक्स्ट देखो नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 into something 0 1 into minus 2/3 minus 2/3 2 into 1/3 plus 2/3 दिख रहे 0 आया फिर नेट हो गया 0 ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਸ ਔਰ नो आगे देखो फिफ्थ वन दैट इज सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 0 into minus 2/3 कितना होगा 0 then 1 into minus 5/3 कितना होगा minus 5/3 then third element 2 into 4/3 is बोलो 2 4 जा 8 8/3 हो गया पूरा सॉल्व नेक्स्ट वन सेकंड रो विद थर्ड कॉलम 0 into something 0 1 into 4/3 4/3 2 into minus 2/3 minus 4/3 चेक करो दिख रहे थे 1 दिख थे 0 दिख रहे सब आ वाली प्लेस थे 0 आ गया ਇੱਥੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ -5 plus 8 3 3/3 1 हो गया ना समझ रहे आ रहा जो चाहिए कि नहीं मुस्कान ऐसा लो देखो डेस्टिनेशन इतने पहले ही पता ਉਹਦਾ फायदा लो नेक्स्ट वन लास्ट नाउ लास्ट थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम बोलो 1 into 1/3 1/3 2 into minus 2/3 minus 4/3 3 into 1/3 इतने है ना की आना चाहिए इतने 0 आना चाहिए 1 minus 4 and plus 3 हो गया 0 नेक्स्ट थर्ड रो विद सेकंड कॉलम 1 into minus 2/3 minus 2/3 2 into minus 5/3 minus 10/3 3 into 4/3 12/3 ਇੱਥੇ भी 0 आना चाहिए चेक करो आ रहा -2 -10 मतलब -12 plus 12 0 हो गया 0 लास्ट क्या आना चाहिए 1 लास्ट ना चेक करो 1 into 1/3 1/3 नाल लिखी भी जाना ठीक है ताकि कोई एरर ना हो नेक्स्ट 2 into 4/3 8/3 3 into minus 2/3 8 plus 1 9 9 minus 6
3, 3 by 3, 1, 3 by 3, 1। हो गया फर्स्ट। ठीक है ना। हूँ सेकंड साइड पिक करो, ए इनवर्स इनटू ए। उर्वशी नाल करना बच्चा। नाउ यू हैव टू डू ए इनवर्स इनटू ए। चलो चेक। नाउ we'll check A inverse into A। किस तरह होना बोलो। Now the first matrix is this one, so row marking, column marking, yes or no। उसका ताही गलती तो बचाएंगे, yes or no। Can you help now everyone। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे आंसर आ जाएगा। आंसर शुड बी 100 010 001। लेट्स चेक। पुरुषी पहला राजा 1/3 इंटू 2, 2/3 नाल ही -2/3 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। और 1/3 इंटू 1 +1। ठीक है, मतलब नेक्स्ट राजा माइनस सॉरी 1/3 इंटू 0, 0 -2/3 इंटू 1 -2/3 1/3 इंटू 2 +2/3 हो गया 0। थर्ड मुस्कान फर्स्ट रो विद फर्स्ट फुल रो होते आना सोचो की कर रहे फर्स्ट रो नाउ मल्टीप्लाइड विद द थर्ड कॉलम, यस और नो। दिस वी आर डूइंग। सो 1/3 इंटू 1 1/3 -2/3 इंटू 2 -4/3 1/3 इंटू 3 +3/3। तो 1 -4 +3 0 आ गया। ਇਹਦਾ 0 आ गया, ਇਹਦਾ भी 0 आ गया। और पहले तो 1 आना चाहिए था, आ रहा है देखो। 2 + 1 3, 3/3 1 हो गया 100। इधर सेकंड चेक करो। इसने हम दोस्तों राजा केड़ा करना सेकंड रो विद पहला फर्स्ट कॉलम पे सेकंड कॉलम पे थर्ड। तो -2/3 इंटू 2 -4/3 -5/3 इंटू 0 4/3 इंटू 1 4/3 कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। नेक्स्ट नाउ सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, यस और नो, विद दिस वन -2/3 इंटू 0 0 -5/3 इंटू 1 -5/3 4/3 इंटू 2 8/3। इतने की आ रहा है -5 + 8 दैट इज 3 3/3 1 मिल गया जो चाहिए था। नेक्स्ट वन नाउ विद थर्ड कॉलम -2/3 इंटू 1 -5/3 इंटू 2 4/3 इंटू 3
-2 -10 +12 0 हो गया लास्ट. नाउ विच रो? थर्ड रो. ठीक है, ध्यान रखना. थर्ड रो विद ऑल द कॉलम्स वन बाय वन. 1/3 into 2, 4/3 into 0, -2/3 into 1. वेरी इजी. 0 आ गया. उसका नेक्स्ट with the second column, 1/3 into 0, 0. Then 4/3 into 1, 4/3. -2/3 into 2, -4/3. 0 आ गया आपस. लास्ट वन, -2/3 into 1. ये पहला केड़ा आया? 1/3 into 1, 1/3. Then 4/3 into 2, 8/3. -2/3 into 3, -6/3. 8 plus 1, 9. 9 minus 6, 3. 3/3, 1. हो गया ना? Yes or no? Now check the third one. What was third? I3. I3 means identity matrix of order 3 cross 3. That is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is our identity matrix, or we can say unit matrix. Okay. Identity matrix is also called unit matrix. Okay. So from above, yeah, as stated above, we have verified that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I 3. ठीक है? Yes or no? Am I clear? Yes or no? ये चीज एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਚ ਨਾਰਮਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ. ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਸੇ x ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, x is a number whose value is 5. What will be x inverse? Do you know that? What will be x inverse? It will be 1/5. X inverse will be 1/5. In numbers I am telling, not in matrix now. दोनों लिंक हो गए दोनों टॉपिक्स की. मैट्रिसेस के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी जा रही है नंबर्स वाली. तो इफ x is 5, x inverse is 1/5. तो उत्थे भी ये प्रॉपर्टी लगती if you multiply x with 1/x. X inverse also you can say. X inverse is also 1/x. Yes or no? ये the answer. और second thing, if you multiply 1/x into x, the answer is 1 unit. So this property works with matrices also. That इतने हर चीज की बनी देखो x into x inverse or x inverse into x is equal to 1. Yes or no? That works for matrices also. Any matrix ये सिर्फ इस क्वेश्चन लिए नहीं है, एक जनरल रूल है. Any matrix when multiplied with its inverse, either order a into a inverse हो जाए या a inverse into a हो जाए, the answer will be identity matrix. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਆ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 1 0 0 0 1 0 ਐਂਡ 0 0 1. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪੇਪਰ, question can also say find the value of a into a inverse.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉ। that will help you ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਣਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਚੀਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। any matrix into its inverse will give answer identity matrix। और उसी चीज की प्रूविंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ कि it worked, this property worked for numbers also and now for matrices also। डिस्कस ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ प्रॉपर, क्लियर है जा? ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ प्रूविंग ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ that if you have a question to find out a into a inverse or a inverse into a, answer will be I। okay, yes or no? listen Raja, next questions। one question is A matrix is given 4 7 6। मैथ्स के अंदर एक सिंपल चीज समझ लो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन्ने कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन करके बिना प्रैक्टिस तो चले जाओगे, पेपर सॉल्व नहीं होने, कोई एरर आ जाना, कोई गलती हो जाना। ठीक है, सो कंसेप्ट वही रहूगा बट प्रैक्टिस इज मोस्ट नीडेड। ओके, 4 7 6 7 -1 8 then 3 4 2। this was the matrix। question says find A inverse। टेल मी A इनवर्स के अंदर की सॉल्व करवा लिया क्वेश्चन ने माइनस चेक करवा ले, को फैक्टर्स चेक करवा ले। नेक्स्ट ट्रांसपोज करना सिखा लिया, मींस इतने डायरेक्टली यू कैन राइट एट जॉइंट ऑफ ए, यस और नो? आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करवा लिया, देन यू विल फाइंड द ए इनवर्स, यस और नो? एनी चीज इन बिटवीन चलेगी। नेक्स्ट थिंग, कल तो एक को फैक्टर्स का भी शॉर्टकट होता हूँ, माइनस को फैक्टर्स नो हले आज इतना ही करना, कल ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ टाइम बचा के। आज हाले प्रॉपर होते ही करो, सारे माइनर सारे को फैक्टर्स एंड सो। ठीक है, एंड ऑल्सो वेरीफाई की करवाऊंगा वेरीफाई, वी नो दैट a into a inverse is equal to a into a inverse की ਹੁੰਦਾ सिर्फ एक ही पूछा की आंसर आऊगा ਇਹਦਾ I with order 3। क्वेश्चन कैन राइट I, क्वेश्चन कैन राइट I3, दैट डिपेंड्स, ਉਹਦਾ मूड है मतलब ਉਹਦਾ होई। ठीक है, हो जाऊगा क्वेश्चन। एक और लिखो ਇਹਦੇ बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट, जस्ट मैट्रिक्स A is 1 3 4 3 -1 and 6 -1 5 and 1। सेकेंड एग्जाम मैट्रिक्स आ गया, कैन दे prove that A transpose the inverse is equal to A inverse the transpose। easy ना क्वेश्चन? ठीक है, you have to prove that A transpose the inverse and A inverse the transpose both should be same। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ फाइंड की करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ A मैट्रिक्स पता, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ A ਦਾ ट्रांसपोज कितना करते हैं रीड रो वाइज राइट कॉलम, बस उस तो बाद यू विल फाइंड A इनवर्स
ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ट्रांसपोज ए इनवर्स पूरा फाइंड करोगे तो बाद उत्ते ट्रांसपोज लगाओगे ठीक है ए इकट्ठा चलूगा दिस इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड और जेड़ा ट्रांसपोज फाइंड किया एदा भी इनवर्स फाइंड करोगे दिस विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और बोथ आंसर्स विल बी सेम हाँ लेफ्ट हैंड साइड ते ए मैट्रिक्स ਦਾ ट्रांसपोज करोगे ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ लास्ट स्टेप पे एडिशन करोगे ट्रांसपोज बोथ आंसर्स विल बी सेम देखो डाउट की आ सकता है इसलिए एक बार दोबारा सुन लो ए पहले राइट हैंड साइड सोचो स्टेप्स की करोगे इस साइड टेल मी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੇ that is minus cofactors cofactor matrix then ਉਹਦੇ ਤੋਂ adjoint find ਕਰੋਗੇ by transposing the matrix adjoint ਤੋਂ ਬਾਅਦ determinant find ਕਰੋਗੇ then ਦੋਨਾਂ ਦੀ division ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ a inverse फिर उस a inverse ਦਾ ਵੀ transpose ਕਰੋਗੇ this was the concept समझ रहे चीज adjoint आ जाऊंगा determinant आ जाऊंगा divide करोगे inverse आया जितने inverse तक चलेगा ना like last question then you will put an extra step of transposing that और left hand side like first of all you will find a transpose उस मैट्रिक्स के ऊपर भी यह सारे अगे लगा दो यस एडजॉइंट करके नहीं इथे ट्रांसपोज इथे हो चुका हूं इथे मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो गया उस ट्रांसपोज के ऊपर सारे फीचर्स लगा दो टिल यू फाइंड इट्स इनवर्स हाँ एडजॉइंट पे जाके एडजॉइंट ਲਈ ट्रांसपोज किया देन यू विल डिवाइड इट बाय डिटरमिनेंट मतलब बस स्टेप सीक्वेंस रख समझ रहे चीज ठीक है नेक्स्ट चीज सुनो राजा सपोज तो एक मैट्रिक्स गिवन है कोई भी इफ ए इंटू तनिष राजा तो अगर कोई क्वेश्चन आया let us suppose like this आज the question आ गया can you find what he is asking a into a transpose ठीक है पेपर से आना पा लियो ट्रांसपोज कह रहे हैं इनवर्स कह रहे हैं दोनों कह रहे हैं किस सीक्वेंस कह रहे हैं सब मैटर करता आंदा सब कुछ है अप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस स्टेटमेंट ने की क्या a into a transpose is equal to a transpose into a is equal to I अगर सानू कोई मैट्रिक्स देता और उत्थे आ प्रॉपर्टी लगाने ਲਈ कहते प्रूव करने ਲਈ कहते कैन यू डू दैट वेरी इजी you know a you know a transpose you know multiplication then opposite order the according multiplication आंसर सानू पता है या ना इस क्वेश्चन आधा पता बट अगर क्वेश्चन कहते प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल तो किसी को नहीं पता सो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मीनिंग पता होना चाहिए prove that the matrix is orthogonal orthogonal means a into a transpose or a transpose into a is equal to I transpose it is in both orders I answer out this is called orthogonal matrix clear है ठीक है प्रॉपर्टी दे देगा you can solve easily but if they say prove that it's orthogonal फिर फंस गए ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਾ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ yes or no you have to learn it by the meaning what's that a into a transpose is equal to a transpose into a is equal to I then what is the meaning of singular matrix a matrix whose determinant is zero any matrix whose determinant comes out to be zero that is called singular matrix
सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिदा डिटर्मिनेंट 0 नहीं है नॉन सिंगुलर। एक चीज याद करो ना, बच्चे दोनों याद करते रहते, पेपर 'ਚ बोल जाना सिंगुलर केड़ा सी और नॉन सिंगुलर केड़ा। एक चीज याद करो, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिदी वैल्यू डिटर्मिनेंट दी 0 whose determinant value is 0, otherwise it's non singular. Clear, yes or no? Okay, listen to this also. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਗੇਨ 15 ਮਾਰਕਸ, ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵਰਸ ਮੈਥਡ ਓਨਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2x1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ। ਪੂਰਵਸ਼ੀ ਸਮਝਿਓ ਰਾਜਾ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। You are given 2x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 9. x2 minus x3 is equal to minus 1. x1 plus x2 minus x3 is equal to 0. Equation is 80. Find the values of x1, x2, x3. ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚੈਪਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚੋਂ। We can do this by inverse method. ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? Inverse. They will say find the value of this using inverse method. Inverse method ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, a into x is equal to b. a into x is equal to b. a into x, रितिका पूरे ध्यान ना बच्चा, a into x is equal to b. What is a matrix? a matrix होना पूरे ध्यान। ਜਿਹੜੇ ਵੀ x ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆ, x1 x2 x3 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ that is called coefficients, means 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ -1, ਇੱਥੇ 3। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ 2 -1 and 3। ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਨ 0, x2 ਦੇ ਨਾਲ 1, x3 ਨਾਲ -1, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 1 -1। थर्ड इक्वेशन 1 1 -1 की ए मैट्रिक्स बन गया। ए मैट्रिक्स आ गया मधुर इनटू एक्स मैट्रिक्स, एक्स दे अंदर की है तीनों x1 x2 x3 इन अ सिंगल कॉलम। इनवर्स मेथड से यही करना है। मैट्रिक्स ए बना लिया विद द कोफिशिएंट्स, बी बना लिया विद द वेरिएबल्स दैट इज x1 x2 x3 एंड a इंटू एक्स आ गया, a बना लिया और x बना लिया इज इक्वल टू b। b इज योर आंसर। आंसर किया 9 -1 एंड 0। a इंटू एक्स इज इक्वल टू b, इक्वेशन याद की थी इनवर्स मेथड ले। a matrix is the derived from the coefficients of x1 x2 x3 बढ़ गया। x matrix is derived from the variables x1 x2 x3 and b matrix the other side is derived from the answers of the equation that is 9 -1 and 0। इतना तक clear होया पहले? This means a into x matrix becomes b matrix, yes or no? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहा हरनूर we need to find the value of this, yes or no? We need to find the value of x matrix मधुर, yes or no? x matrix ਦੀ वैल्यू फाइंड करनी की करनी सी इक्वेशन तनिष कि x matrix ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ x is equal to b upon a, बट ਇਹ मैट्रिसेस है तो a डिवीजन च मैट्रिक्स कदे नहीं लिखते, तो ਉਹਨੂੰ a ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਨਾ। कभी भी मैट्रिक्स ने डिवीजन च लिखना ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। so it becomes x is equal to a inverse into b। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਮੈਥਡ ਆਇਆ as it is ਚੱਲੂਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। you need to find matrix x, you need to find matrix x। how can you find that? by multiplying a inverse into b, a inverse into b, a inverse into b। so तनिष a मैट्रिक्स है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ कि आज इन्ने क्वेश्चंस इनवर्स करना सीखे?
कैन यू फाइंड ए तो ए इनवर्स, जितना ही ए इनवर्स मिल गया कैन यू मल्टीप्लाई इट विद बी, बी भी ਤਾਂ ਪਤਾ 9 -1 and 0, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਆंसर ਆਇਆ। यस दैट विल रिमेन सेम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੋਗਾ when you will multiply a inverse with b। ਅਸੀਂ a inverse ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ a inverse ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। now you know the matrix a, मुस्कान yes or no, matrix a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ इजीली। after that will you multiply it by b, जो आंसर आऊगा it will be in single column, so that will be equal to matrix x, तो x1 x2 x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। this is the question। तो ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਤਿਕਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ x1 x2 x3 ਆ ਜਾਂਦਾ। समझ रहे, दिस इज योर इनवर्स मेथड, दिस इज योर इनवर्स मेथड, ठीक है। इतना करके आना। ओके रजत।